Hello everyone, my name is Amrit and I welcome you all to this important yet very interesting topic of nutrition in animals. Right. So let's begin. So when we think about nutrition, right? So हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा that what all are the different types of food that we consume जिसकी वजह से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, हमारे बॉडी में ग्रोथ होती है, राइट? सो food is something which is required for growth. It is something which is required for the repairing of our body and most importantly हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है. जब भी आप कभी खेल रहे हैं, कभी गिर जाते हैं, आपको चोट लगती है, तब आपके बॉडी में जो सेल्स है वो रैपिडली डिवाइड करते हैं ताकि जिस जगह पे आपको चोट लगी हो प्लेस इज हील्ड. एंड ये सारी चीजें करने के लिए आपके बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है और ये एनर्जी आपके बॉडी को मिलती है फ्रॉम द फूड दैट यू ईट, राइट? सो एनिमल न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो इट इन्वॉल्व्स द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, राइट? कि वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक कर रहा है या वो फूड को डायरेक्टली इंजेस्ट किया जा रहा है बॉडी के अंदर, राइट? सो किस तरह से इस खाने को बॉडी के अंदर लिया जा रहा है एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, हाउ इज दिस फूड लेटर ऑन प्रोसेस्ड इन द बॉडी सो दैट आपके पूरे बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ मिले, आपके बॉडी का फंक्शनिंग अच्छी तरह से हो सके, राइट? सो डाइजेशन इज द ओवरऑल प्रोसेस जो ह्यूमंस के केस में हम देखते हैं विच एक्चुअली हेल्प्स, राइट? ये वो पूरा प्रोसेस होता है जब फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है हमारे बॉडी के अंदर एंड द यूजफुल पार्ट उसे फर्दर यूटिलाइज करके हमारी बॉडी ग्रोथ, अपने रिपेयर एंड सेवरल अदर फंक्शनिंग के लिए यूज करती है. सो if we look at this, right, the breakdown of complex components of food into simpler substances, that is called your digestion, right? बहुत ही सिंपल इसका डेफिनेशन है दैट कोई भी फूड हम कंज्यूम करते हैं, राइट? सो लेट्स से वी आर कंज्यूमिंग अवर लीफी वेजिटेबल्स, राइट? तो ये जितने भी आपके लीफी वेजिटेबल्स है दे आर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, राइट? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनके अंदर जिन्हें ब्रेक करना पड़ता है, अदरवाइज हमारी बॉडी उसे प्रोसेस नहीं कर पाएगी. एंड इन ऑर्डर टू डू दैट this complex food, it is first broken down into simpler substances and this entire process, right, इसे हम digestion बोलते हैं. and these complex components जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं they cannot be directly utilized by the body, right? and therefore they are broken down into simpler forms. ठीक है, हम उसे smaller simpler forms में break करते हैं. so now there are different ways of taking food, right? बहुत सारे अलग अलग तरह से फूड को बॉडी में इंजेस्ट किया जा सकता है, फिर उसे फर्दर यूटिलाइज किया जा सकता है. जैसे इन केस ऑफ हमिंग बर्ड्स, राइट? सो हमिंग बर्ड्स they take up the nectar from flowers with the help of their long beak. ठीक है, वो अपने long beak का help लेते हैं in order to do that. Similarly, calves, right? जो आपके young calves होते हैं they take the help or they take milk from the mammary glands of the female cows or female buffaloes, right? Similarly, स्नेक्स जो होते हैं वो डायरेक्टली स्वॉलो करते हैं फूड को, ठीक है? दे डोंट बाइट, दे डोंट सक, दे डायरेक्टली स्वॉलो द फूड कंप्लीटली, राइट? एंड similarly in case of butterflies, right, they have a very long structure, right, जिसे proboscis बोला जाता है, जिसको यूज करके butterflies they take up the nectar from flowers, right? and similarly in case of leeches, right, leech की अगर हम लोग बात करें so they hook on to a host organism, right? let's say the host organism is human, तो ये हमारे बॉडी के ऊपर they latch on to our body, right, with the help of hooks which are present in their mouth, और उसके बाद they suck our blood, right, because they are parasites,
they depend on a host organism for their nutrition, right? So let's get into the details of digestion in humans, right? हमारे बॉडी में ये पूरे डाइजेशन की प्रोसेस किस तरह से होती है. So in order to achieve this, right, our digestive system, it is made up of different parts, it is made up of different glands, right? So let's look at them. सबसे पहले आता है आपका बकल कैविटी, right? So that includes your mouth, और माउथ के अंदर आपके जितनी भी चीजें हैं वो सब इसमें इंक्लूड होती है, including your teeth, your tongue, your salivary glands, right? All these things. बकल कैविटी के बाद आता है your esophagus, right, which is also known as the food pipe. And through the food pipe, the broken down food, it passes from your buccal cavity into your stomach, right? So that this passage, right, it takes place via the esophagus. Then comes your stomach, यहाँ पे further food को digest किया जाता है. Then comes your small intestines, right, this region. यहाँ पे the complete breakdown of food takes place and the food is finally absorbed, right? The important components of the food, it is absorbed into the blood. Then comes your large intestines. यहाँ से जो remaining undigested food material है वो pass on होता है, right? This part of your digestive tract, this is your large intestine. Then comes your rectum and finally the anus, right? The food, it is passed to your rectum and finally through the anus it is removed out of the body, right? So all these parts, they form your digestive system along with glands, right? There are three major glands which help in the overall process of digestion. They include your salivary gland, which are present in your mouth, right, and they secrete saliva, right? Then comes your liver, right? You can see that the liver, it is situated just right next to your stomach. And then comes your pancreas, right, which is situated directly below your stomach, right? And the digestive tract and the associated glands together, they constitute the digestive system, right? So this is very important. All the different parts, right, which we saw before this, your buccal cavity, the food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus, plus your associated glands, that is your salivary glands, liver, pancreas, all of these, they together make up your digestive system, right? So it's a very long, very complicated part present in your body, made up of different organs, different tissues, right? So let's get into the details of all this, starting with the mouth or the buccal cavity, right? So you know the process, right? ये जो पूरा आपका process है, when food enters into your mouth till it leaves your body, right? So there are several processes which takes place, starting with your ingestion, right? And what exactly is ingestion? It is the process of taking food into the body. ठीक है, आप food जब अपने body के अंदर intake करते हो, उस process को ingestion बोला जाता है. Teeth, it helps with the mechanical breakdown of food, right? So there might be cases कि कुछ food आप consume कर रहे हैं, उसको पहले mechanically break down किया जाता है, right? यहाँ पे कोई chemical process involved नहीं होता. This is just physical mechanical process of breaking down food into smaller and smaller particles, right? And each tooth, right, it is rooted in a separate socket in gums, right? तो जो ये lower layer present होता है आपका buccal cavity में, your teeth, they are rooted into your gums, right? All the teeth, they are rooted in your gums, and you know which provides it a strong foothold. ये अच्छे से anchor हो जाते हैं आपके gums में. The different types of teeth, right, which are present in your mouth, they include your incisors, your canines, your premolars and your molars, right? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं these front part of teeth, right? This entire part is your incisors. Then comes your canines, right? Canines के बाद आते हैं आपके premolars, and after that comes पीछे के part में जो teeth present होते हैं, they are your molars, right? And then your tongue, right?
आफ्टर दैट यार इन आपके माउथ और बकल कैविटी में आपके सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. राइट नाउ सलाइवरी ग्लैंड्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज यहाँ पे सबसे पहला आपका केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है. राइट, दैट इज योर कंप्लीट इनिशियल डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. डाइजेशन जैसे ऑलरेडी हम लोगों ने पहले देखा, इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स form into a simpler form, right? So salivary glands, what do they produce? They produce saliva, and your saliva, it contains an enzyme by the name of salivary amylase. And what is the function of salivary amylase? It breaks starch into simple sugars, right? So starch, right, it is a very complex form of sugar. It is a complex carbohydrate that is broken down into a simple form of sugar, right? So that is how it works. अब ये समझिए that जो teeth, right, when you chew your food with the help of your teeth, right, तब क्या होता है, you are breaking down food into smaller and smaller particles, right? उसकी वजह से क्या हो रहा है कि this food particle, it is then broken down into smaller particles, and in the process what are we doing? We are increasing the surface area. ठीक है, हम surface area increase कर रहे हैं इसका. सरफेस एरिया इंक्रीज करने का फायदा क्या होगा? द salivary amylase, right, that will be able to react with each of these particles in a much better way, right? जिसकी वजह से जो एंजाइम का रिएक्शन है वो ज्यादा अच्छे से होगा, and there would be a much better breakdown of these food particles, right? So talking about the tongue, right, it's a very fleshy muscular organ, right, and it is attached to the back of the floor, right, of the buccal cavity. आपके माउथ के बैक एंड पे फ्लोर के साथ ही आपका टंग अटैच्ड होता है. फंक्शन की अगर बात करें तो इट हेल्प्स अस टू टॉक, इट हेल्प्स अस इन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड, राइट, एंड इट आल्सो हेल्प्स इन swallowing ऑफ फूड. ठीक है, फाइनली जो टंग है वो पुश करता है आपके फूड को इनटू योर फूड पाइप, राइट, और इनटू योर ईसोफेगस. एंड फाइनली आपके टेस्ट में आपके टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, व्हिच हेल्प्स यू टू डिटेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स, राइट. जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं आपके फूड में, उसके बेसिस पे आप अलग अलग तरह के फ्लेवर आपका नर्वस सिस्टम आइडेंटिफाई कर पाता है, राइट. सो योर फूड पाइप and your windpipe, right, they are very closely located to each other, right, and therefore it's very important that जब आप food consume करें, right, तब you should not talk very much, right, because यहाँ पे आप देख सकते हैं that the food when it passes through your tongue, right, when it is pushed down by your tongue, there is a very narrow space between your food pipe and the windpipe, right, and there might be chances that whenever you are drinking water or eating something, those food particles or water, it might enter into your food pipe, right. तब बहुत जोर से आपकी body react करती है and you start coughing, right. So basically the body, it is trying to push out the food particle or the water which has entered inside the windpipe, right. Then after you have broken down your food, it is completely mixed with your saliva, ठीक है, it is pushed by the tongue into your food pipe, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं that the food pipe, it runs along the neck through the chest into the stomach, right. और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो फूड को बहुत ही रेगुलेटेड तरीके से पास किया जाता है थ्रू द फूड पाइप, राइट. इनिशियली द फूड पाइप, राइट, इट opens up, ठीक है, which allows the food to move forward, and then it is squeezed, ठीक है. So it's opening and closing, right. So this regulated movement of food through contraction and relaxation of muscles, this is known as peristalsis, ठीक है. इस प्रोसेस को हम peristalsis बोलते हैं, right. And this is something which is seen throughout the digestive tract, right, and it is a very important process through which food एक साथ वो पास नहीं हो जाता है आपके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक से, धीरे धीरे करके रेगुलेटेड वे में उसे पास किया जाता है. आफ्टर दिस कम्स द स्टमक,
right? So when we look at the stomach, it is a very thick walled bag, right? Bag जैसा structure है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, right? And this thick walled bag structure, it is the widest part of the alimentary canal. Okay, पूरे alimentary canal का सबसे widest part है ये, right? And it receives the food from your food pipe, which is your esophagus, and when the food enters inside, right, and after the process of digestion, it then exits into the small intestine, right? So आपकी जो inner lining होती है stomach की, right, उसके अंदर दो चीजें present होती है, right? This inner lining of stomach, यहाँ से दो चीजें present होती है. One is your hydrochloric acid and the other thing is your mucus, right? So hydrochloric acid, as the name suggests, that an acidic medium is required, right, which helps the digestive juices to act on the food which has been passed from your food pipe into the stomach. And ये किस चीज में further help करते हैं? They help to break down the proteins into simpler substances, right? So salivary glands वो starch का breakdown करते हैं. Hydrochloric acid, they help to break down proteins into simpler substances. और इन digestive juices को act करने के लिए किस तरह का environment की जरूरत है? Acidic environment या acidic medium की जरूरत है, which is achieved with the help of hydrochloric acid, right? And the lining of mucus, right, if you think about it, it is a very important layer because the hydrochloric acid, as the name suggests, it is an acid, right? So there are chances that stomach के खुद के inner layers वो destroy हो सकते हैं because of the acid. And ये जो mucus का layer है, it protects that lining, the inner lining of stomach and the gastric glands from the adverse effects of hydrochloric acid. नाउ आपका फूड जो है वो आपके स्टमक में डाइजेशन हो गया है, प्रोटीन्स दे आर ब्रोकन डाउन, जो स्टार्च है उसका भी ब्रेक डाउन हो गया है आपके माउथ में. नाउ द फूड इट इज पुश्ड again in a very regulated manner into your small intestine, right? And अगर आप ये वाला portion देखें पूरा, right, so your small intestine, it is a highly coiled structure, right? It is coiled so that it can be fitted in this small space, right? So it is highly coiled and it is 7.5 meters long. And another important thing which happens here is it receives secretion from the liver and the pancreas. मतलब आपके दोनों glands, liver and pancreas, वो अपने secretions small intestine में deposit करते हैं, right? So when we talk about the liver, so your liver is a reddish brown gland, right, which is situated in the upper part of the abdomen on the right hand side. ठीक है, तो अगर आप अपने खुद के बॉडी को कंसिडर करें तो your right hand side, यहाँ पे upper abdomen वाले region में आपका liver present होता है, and it is the largest gland in the human body, right? This is worth noting that your liver, it is the largest gland in our body. लिवर क्या सिक्रीट करता है? लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, right? It secretes bile juice which is stored in a sac called gallbladder. ठीक है, तो लिवर it secretes bile juice which is then stored in a sac like structure जिसे हम gallbladder बोलते हैं. फंक्शन क्या है बाइल का? बाइल इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. तो जो भी आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसमें फैट का कंटेंट रहता ही है, राइट? इट इज वेरी डिफिकल्ट, और मोस्ट ऑफ द इंडियन preparations में, food preparations में, there is a good quantity of either ghee or butter and such things, right? And therefore fat becomes a very important thing that needs to be digested, with which your bile juices help, right? Similarly, when we talk about pancreas, right, so pancreas, it is a large cream colored gland which is located just below the stomach, right? This part which you can see over here. And pancreatic juices, right, they act on carbohydrates, fats and proteins, and
changes them into simpler forms, right? तो pancreas क्या secrete करते हैं, वो pancreatic juices secrete करते हैं, and these juices they act on everything, right? They act on carbohydrates, they act on fats and proteins, and again the same function, complex form, it is broken down into simpler forms, right? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो गॉल ब्लैडर, राइट, विच रिसीव्स योर बाइल जूस, एंड पैंक्रियास, ये दोनों अपने सिक्रीशंस स्मॉल इंटेस्टाइन में डिपॉजिट कर देते हैं, राइट? सो अलोंग विद द फूड विच इज बीइंग पास फ्रॉम योर स्टमक, आपके सिक्रीशंस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो रहे हैं, राइट? नाउ लेट्स गेट इनटू द फाइनल ब्रेकडाउन, ठीक है? फूड फाइनली किस तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे। ये जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है, राइट, ये अभी कहाँ पे पहुंच रहा है? इट नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हेन द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, ठीक है? अब आपका जो फूड है उसका माउथ में डाइजेशन हो चुका है, अमाइलेज ने ब्रेक डाउन किया स्टार्च को, स्टमक में प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन हुआ, further when it moved into the small intestine, right? तो यहाँ पे अब secretion from liver and secretion from pancreas दोनों यहाँ पे present है। it is ये food, right, it moves along the coiled path of your small intestine, and यहाँ पे intestinal juices भी secrete होते हैं जो finally complete breakdown कर देते हैं of all the different components of the food, right? So basically what happens over here, and this is something जो आपको बहुत attentively सुनना चाहिए, carbohydrate, it gets broken into simple sugars such as glucose. Fatty acids, they get broken down, sorry, your fats, they get broken down into fatty acids and glycerol, and proteins, they get broken down into amino acids, right? So again, I'll repeat this, right? Your carbohydrates, right, they get broken down into simple sugars such as glucose, okay? Your fats, they get broken down into fatty acids plus glycerol, and your protein, it gets broken into amino acids. So this is the final form in which the food it is then absorbed into the blood, right? So अब ingestion हो गया, digestion हो गया, right? Next step जो आता है वो है absorption का, ठीक है? Absorption में क्या होता है, that the digested food, right, the completely broken down food, it can now pass into the blood vessels, right? And that happens via the wall of the intestine, and this entire process where this digested food it is passed through the walls of intestine into the blood vessel, it is called absorption, ठीक है? अगेन यहाँ पे समझिए कि ये पूरा प्रोसेस क्यों हो रहा है। इनिशियली हम लोगों ने ये पढ़ा दैट फूड इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज हमारे बॉडी में जितने भी अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, ग्रोथ हो गया, ठीक है, रिपेयर हो गया, एंड द ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। फूड के जो कंपोनेंट्स है जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, इनकी ज़रूरत पड़ती है, राइट, सेल के रिपेयर के लिए, सेल के फंक्शनिंग के लिए। गुड एग्जाम्पल इज, अगर मैं ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, सो ग्लूकोज इट इज रिक्वायर्ड बाय अवर सेल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए इसकी जरूरत पड़ती है बिकॉज दिस ग्लूकोज इट इज ब्रोकन डाउन इन अवर सेल्स, राइट, टू जनरेट एनर्जी, राइट? सो जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स होते हैं, राइट, इट कंटेन्स थाउजेंड्स,
of finger-like outgrowths, which are called villi, right? Which you can see over here. If this is the wall of our intestine, right? If we take a small cross section and we, you know, मैग्नीफाई करके देखें तो वहां पे हम लोगों को ऐसे thousands of finger like growth दिखाई देंगे, right? And even if we further magnify this, right, अगर हम लोग और एक सिंगल इसको देखें, right, so we see such structure, right, जिसमें भी आपके further microvilli present होते हैं, right? So what happens here exactly is villi में that villi it increases the surface area for the absorption of the digested food. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने सारे thousands of villi हैं, उसकी वजह से again surface area आपका बढ़ जाता है ताकि food easily digest हो सके, right? And each villus it has a network of thin and small blood vessel close to its surface. So basically when the food it passes, right, ये आपके villi का जो thin लेयर होता है, राइट, थिन सरफेस होता है, उसके थ्रू होके ये आपके ब्लड वेसल में अब्सॉर्ब हो जाता है, राइट? एंड फ्रॉम हियर इट इज देन ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट? आपका जो पूरा ब्लड वेसल है, राइट, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, right? So this glucose or amino acids or fats, whatever the components that are present, right, they are then transported to different parts in your body. So basically different cells and tissues of your body. बीच का जो ये आप structure देख रहे हैं, right, this white structure, this is called a lacteal, right, and this helps with the absorption of fats. So the surface of villi it absorbs the digested food material, and the absorbed substances they are transported via blood to different organs, right, which in return are delivered to different tissues, which in return are delivered to different cells, right? Absorption हो गया. Now the next step which comes is assimilation. Okay, so assimilation में क्या होता है that sorry, the process, right, in which digested food materials are transported to different organs of the body where they are used to build complex substances required by body is called assimilation, right? अभी सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं तो आपके बॉडी में thousands and thousands of cells present है और हर एक सेल को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है. So ये जो न्यूट्रिशन आपके फूड से अब आपके ब्लड वेसल में पहुंचाया गया है, now this is sent to different parts of your body. ठीक है, आपके बॉडी के जितने भी अलग टिश्यूज और ऑर्गन्स और सेल्स है, अलग अलग पार्ट में इसे भेजा जाता है ताकि वहां पे अगेन ये अमाइनो एसिड्स, योर ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज, इन सब को यूज करके different complex substances बनाए जाए, right? And it can be anything. It can be the formation of a new cell, right? It can be the formation of a new protein or a different type of protein. ठीक है, so that is your process of assimilation, right, where digested food materials they are transported to different organs of body where they are used by the body to build complex substances, right? सेल के अंदर ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है आपका, उसे ब्रेक किया जाता है with the help of oxygen to generate carbon dioxide and water, and energy is released, right? So what is being described over here, the process of respiration is being described over here, right? और इसको अगर मैं आपको रिएक्शन के फॉर्म में लिख के बताऊं, right, so this will be your glucose in the presence of oxygen, right, we get carbon dioxide plus water plus energy, right? और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है it is then removed from the body, right, through the process of breathing, right, about which we will later study in the topic of respiration, right? So this is one of the examples in through which जो digested food material है वो किस तरह से हमारे बॉडी में यूटिलाइज होता है वो बताया गया, राइट? अब क्या होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड है, राइट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब नहीं हुआ है, इट इज देन moved to the large intestines.
Large intestine, right, the name is given not because of the length, but compared to your small intestines, they are much wider, right? Hence the name large intestines. So they are wider and shorter than the small intestine, and they are only 7.5 meters in length, right? Large intestine का आपका function क्या है? Its function is to absorb water and some salts from the undigested food material, right? Water, body water को waste होने नहीं देती है. अगर कोई water remaining रह गया हो तो वो absorb कर लिया जाता है through the small intestine, right? And salts, right, which is again important for the body. जो आपका रिमेनिंग वेस्ट होता है, राइट, जो सेमी सॉलिड वेस्ट होता है, जैसे हम फीसीज बोलते हैं, राइट, फीसीज दैट इज देन पास्ड ऑन टू द रेक्टम, राइट, और रेक्टम से फिर ये हमारे बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है वाया द एनस, राइट. सो the fecal matter, right, it is removed through the anus from time to time, and finally जो आपका ये पूरा प्रोसेस है, it ends with egestion, राइट. सो अगर स्टार्टिंग से हर एक डिफरेंट प्रोसेसेस है जो इसमें इन्वॉल्व है, उसको अगर मेंशन करना हो तो इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले आएगा आपका इंजेशन, इंजेशन के बाद आएगा आपका डाइजेशन, डाइजेशन के बाद आएगा आपका एब्जॉर्प्शन, देन कम्स योर असिमिलेशन, and finally the undigested food, it is removed via digestion, right. ये सारे steps involved होते हैं, right. So now let's see कि दूसरे organisms, more specifically आपके grass eating जो animals होते हैं उनमें digestion किस तरह से होता है. So grass eating animals को आपने notice किया होगा that they continuously keep on chewing, right, when even when they are just relaxing or they are just sitting, right, तो भी उनका जो mouth है वो continuously move करते रहता है, right. So this happens because whenever they eat, right, जब भी वो grass consume करते हैं, then they quickly swallow the grass and they store it in the part of the stomach which is called your rumen, right. और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पीछे का जो दिस रीजन, राइट, ये ग्रीन कलर का जो पार्ट आप देख रहे हैं, दैट इज योर रूमेन, राइट. यहाँ पे आपका ये क्विकली स्वॉलोड ग्रास या सॉल्व उसको वहां पे स्टोर किया जाता है. रूमेन में द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इट इज कॉल्ड कड, ठीक है, हम कड बोलते हैं उसको. इसके बाद क्या होता है दैट लेटर आपके रूमेन से जो कड है वो वापस आपके माउथ में ट्रांसफर किया जाता है, राइट. इट रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स, राइट, छोटे छोटे लम्प्स में, पार्ट्स में वापस माउथ में भेजा जाता है, वेयर द एनिमल चूज इट, राइट. और ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड रूमिनेशन, ठीक है. उस पूरे प्रोसेस को हम रूमिनेशन बोलते हैं, एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेट्स, राइट. सो दो टर्म्स जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, एक आपका rumination, right, this is a process where the cud, it is being returned to the mouth in small lumps, right. ऐसे एनिमल्स जिनमें rumen प्रेजेंट होता है और जिनमें rumination का प्रोसेस होता है, they are called your ruminants, right. So जो ग्रास होती है, राइट, सो बेसिकली योर ग्रास, इट इज रिच इन सेल्यूलोज, राइट. सेल्यूलोज नाउ इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, राइट. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक इट. रूमिनेंट्स जैसे आपके कैटल हो गए, काउस, बफेलोज, राइट, डियर्स, हॉर्सेस एटसेट्रा, इनमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, राइट, जो उनके रूमेन में होता है, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, राइट. Humans के केस में we do not have that particular bacteria in our small or large intestine, and therefore it is very difficult for us to digest cellulose, right. इसलिए we cannot directly consume grass, right. करना भी नहीं चाहिए, और प्लीज आप करिएगा भी मत. It is not something which is meant for the human body, right.
Animals like your horses, rabbits, right, they have a large sac like structure called cecum, right? And ये जो स्ट्रक्चर है सीकम, इट इज सिचुएटेड बिटवीन योर इसोफेगस एंड योर स्मॉल इंटेस्टाइन. तो जो सेल्यूलोज होता है आपके फूड में, उसका डाइजेशन यहाँ पे होता है, राइट, बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, राइट. Moving on, if we look at the entire feeding and digestion process in amoeba, right now amoeba is an amazing organism because it does not have any particular shape. अगर आप इस तरह का भी shape draw करके आ जाओगे अपने examination में, right, even then it is completely right because amoeba does not have any particular shape. Yes, but one thing which you have to remember is whatever diagram you draw, please remember to label it appropriately. So amoeba is a microscopic single-celled organism which is found in pond water. Microscopic means we cannot see it through our naked eyes. We do require the use of a microorganism to see amoeba, right? So it has a cell membrane, right? This part आपके cell के चारों तरफ जो boundary देख रहे हैं, right? That is your cell membrane, and a rounded dense nucleus and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. Amoeba, it constantly changes its shape, right, and position. It pushes out one or more finger-like projection, which is called your pseudopodia, right. तो ये जो आप projections बाहर निकले हुए देख रहे हैं, right, these are called your pseudopodia. ठीक है, pseudo का मतलब होता है false, and podia का मतलब होता है feet, right. So since amoeba, it does not have a fixed shape, इसका मतलब क्या हुआ, that any of these projections, right, they can act as feet. amoeba do not have a true feet. जैसे हमारे बॉडी में हमें पता है कि हमारे हैंड्स कौन से हैं, हमारे फीट कौन से हैं. amoeba के बॉडी में there is not one fixed part which acts as a feet. Any of these projections, they can act as a feet, and hence they are called your pseudopodia or false feet, right. So amoeba के केस में फीडिंग और डाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है. Amoeba, it feeds on microscopic organisms, right, and whenever it sees food, it pushes out its pseudopodia, और वो उस पूरे फूड पार्टिकल के चारों तरफ pseudopodia को फॉर्म कर लेता है, and then it engulfs the food, right, वो उसे अपने बॉडी के अंदर engulf कर लेता है. The food, it becomes trapped in a food vacuole, right. So what you see over here, this is a food vacuole, right. Now सेम थिंग हैपेंस, राइट. डाइजेस्टिव जूसेस आपके सिक्रीट किए जाते हैं आपके फूड वैक्यूल के अंदर. ये डाइजेस्टिव जूसेस, दे एक्ट विद द फूड, राइट, दे ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, राइट, और ग्रेजुअली जो आपका डाइजेस्टेड फूड है वो आपके बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब होने लगता है, राइट. एंड अब आपको पता है कि फूड जब फाइनली अब्सॉर्ब हो जाता है तब असिमिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, वेयर अब्सॉर्ब सब्सटेंसेस, दे आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, राइट, दे आर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, और जो आपके अनडाइजेस्टेड रेसिड्यूज होते हैं उसे आपके बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, राइट. सो असिमिलेशन के लिए द अब्सॉर्ब फूड मटेरियल्स, दे आर सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट, और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, इट इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम द वैक्यूम, राइट. और सेम चीजें जो हमारे बॉडी में होती है ऑलमोस्ट सेम अमीबा में भी देखा जाता है. दैट इंजेशन होता है सबसे पहले, डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड फाइनली इजेशन, राइट. सो that was it, a very quick review, a quick revision of the entire topic. It's a very important topic because the process of digestion is something which also comes in your higher grades, more specifically in your 10th grade, right. So I hope you learned something important from this entire revision, right? Thank you so much for joining in.